Good morning, children. Open your new Sparkle semester series, Junior KG Semester 1 book. Page number 8. Open page number 8. Capital letter A. The sound of A is a, a, a. The sound of A is a, a, a. That is A for arrow, A for axe, A for apple, A for apple. The capital letter B. The sound of B is B. The sound of B is B. B for ball, B for bell, B for bat. C. Capital letter C. The sound of C is K. C for cat, C for cake, C for cap, C for cap. D. The sound of D is D. D for doll, D for door, D for duck. The sound of E is A. The sound of E is A. E for egg, E for engine, E for elephant. F. The sound of F is F for frog, F for fan, F for fish. The sound of G is G. The sound of G is G. G for gun, G for gum, G for grapes. H. The sound of H is H for hat, H for hut, H for hen. Alphabet review E, F, G, H, what we have completed. A, B, C, D, E, F, G, H we have completed, no? I. Alphabet I. The sound of I is E. I for inkpot, I for insects, I for igloo. J. The sound of J is J. J for jam, J for joker, J for jug. The sound of K is K for key, K for king, K for kite. The sound of L is L for lotus, L for lion, L for leaf, L for leaf. Alphabet review I, J, K, L we have already completed. Capital M. The sound of M is M for mat, M for monkey, M for mango. N. The sound of N is N for net, N for nest, N for nail polish, N for nail polish. O. The sound of O is O. Okay. O for octopus, O for ostrich, O for orange, O for orange. P. The sound of P is P. The sound of P is P. P for parrot, P for puppy, P for pot. Alphabet review MNOP. Q. The sound of Q is quack, 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 quack. Q for queen, Q for quiver, Q for cure, Q for quill. Q for queen, Q for quiver, Q for quill. R. The sound of R is R.
Okay. R for radish, R for ring, R for rat, R for rat. Okay. Yes. The sound of S is S for snail, S for sun, S for seal, S for seal. This is aqua animal, aqua creature you can say. T, the sound of T is stir, the sound of T is stir. T for table, T for tiger, T for tomato, T for tomato. Alphabet U, that is Q, R, S, T. We have completed this also. Now U. The sound of U is The sound of U is U for urn, U for umpire, U for umbrella, U for umbrella. V. The sound of V is van. V. The sound of V is V. V for van, V for violin, V for vase, V for vase. Now we will learn two alphabets today, that is W and X. W and X. First we will see about the letter W. This is a new topic today with a new alphabet W. Then we will come to X. Then we will come to X. Okay. Yes, see here. W. We have completed. Yesterday we completed U and V. Today we will complete W and X. So, तुमने कभी वाटरमेलन खाया है? वाटरमेलन को खाया है कभी? वाटरमेलन, कडिंगला जिसको बोलते हैं, खाया है तुमने कभी? ओपन करने के बाद रेड होता है, उसमें बीज होता है. खाया है तुमने खाया है बच्चों? यस. एंड वेल, WELL, वेल मनी वीर. और वेल, वेल मनी ये एक्वा क्रिएचर है जो पानी में सी के पास रहता है. ये पानी में सी के पास रहता है. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, सो सी हियर. The sound of W is wa, wa. The sound of W is wa, wa. Have you understood? The sound of W is wa, wa. W for watermelon, W for watermelon, W for well, W for well, W for well, W for well. This is aqua क्रिएचर जो सी के पास देखने को मिलता है. ओके. W फॉर वाटरमेलन, वाटरमेलन तुम बाजार से लाके इसको खाते हो ना सभी, इसका जूस भी बनता है. ओके, सो ट्रेस द लाइन्स टू कंप्लीट द पैटर्न. वी विल ट्रेस द लाइन्स टू कंप्लीट द पैटर्न. हियर ऐसे सिर्फ तुम्हें ऊपर नीचे चारों लाइन पकड़ के तुम्हें ऐसा लाइन देना है बस. ऐसे तुम्हें दिया है, पैटर्न है तुम्हारा ये W के लिए. ओके, see here. This way you should just go on writing. See here. See here, this way. Okay, this way after writing, write the letter W. W for watermelon, W for watermelon,
W for watermelon. W for watermelon. W for watermelon. W for watermelon. How to write here? एक स्लैंटिंग लाइन, फिर दूसरा स्लैंटिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन, सेकेंड स्लैंटिंग लाइन, ऐसे तुम्हें V निकालना है. एक V, दूसरा V निकालने से W बन जाता है. W फॉर वेल. W फॉर वेल. W फॉर वेल. W फॉर वेल. W for well. W for well. Okay. W for whale. W for whale. W for whale. थोड़ा ये साइड में आ गया. W for whale. W for whale. W for whale. W for watermelon. W for watermelon. W for watermelon. W for well. W for well. W for whale. Then that is a watermelon. That is a watermelon. That is a watermelon. Okay. So after watermelon, W for watermelon, the sound of W is wa, wa, wa. After that X. After that X. Page number 36. X. X for fox. X for fox. Fox यानी कोला. The fox and the grapes तुम्हें एक स्टोरी बाद में मैं पढ़ाऊँगी. The story. X for ox. Ox यानी बैल. X for box. X for box. Box जो घर में तुम्हारा डब्बा बिब्बा होता है, छोटा छोटा बॉक्स की तरह, जिसमें मेडिसिन्स, दवाई आती है पैकिंग करके, तुम्हारा उसमें कोई बहुत सारे थिंग्स बॉक्स में आती है. ओके. ट्रेस द लाइन्स टू कंप्लीट द पैटर्न. ट्रेस द लाइन्स टू कंप्लीट द पैटर्न. तो हमें ऐसे देखो स्लैंटिंग लाइन करना है. पहले तुम्हें स्टार्टिंग में ये लाइन सिखाए ना बच्चा, सिखाए ना. यस. देखो तुम्हें लिखने में आसानी नहीं होगी. इस तरह से तुम्हें लाइन को देना है बस. अब तुम्हें मैं इसको लिखाऊंगी. ओके. राइट द लेटर एक्स. देखो यहाँ पे एक लाइन देना है ऐसे, यहाँ पे एक लाइन देना है ऐसे. दैट इज एक्स फॉर फॉक्स. 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 एक्स फॉर ऑक्स. एक्स फॉर ऑक्स. एक्स फॉर ऑक्स. X for ox. X for ox. X for ox. Then X for box. 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 Okay. तो फिर यहाँ पे देखो X फॉर ऑक्स. X फॉर ऑक्स. X फॉर फॉक्स. X फॉर फॉक्स. X फॉर बॉक्स. X फॉर बॉक्स. That is a fox.
That is a fox. That is a fox. That is a fox. 13, 9, 20, 21 कैपिटल लेटर W लिखना है हमें. W. W for watermelon. W for watermelon. W for watermelon. W for well. W for well. W for well. W for whale. W for whale. W for whale. ओके. उसके बाद W for watermelon. W for watermelon. W for watermelon. W for well. W for well. W for well. W for whale. W for whale. W for whale. W for watermelon. W for watermelon. W for watermelon. कैसे लिखना रहा है समझ में आ रहा है ना तुम्हें. देखो ऐसे पहले ऐसे करना है, फिर वी, एक वी निकालना है तुम्हें और एक वी साइड में निकालना है. इस तरह से तुम्हें लिखना है W. 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 Have you understood? Okay. Now we will see one more writing alphabet, that is X. Capital letter X. 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 X for fox. X for ox. X for box. X for fox. X for ox. X for box. X for fox. X for ox. X for box. Fox. X for ox. X for box. X for fox. X for fox. X for fox. X for ox. X for ox. X for ox. X for box. X for box. X for box. Here. This way. This way. ऐसे करना है, ऐसे करना है. बस तुम्हें 3 लाइन टच करके देखो. मैंने एक लाइन में लिखा है, इसी तरह तुम्हें भी लिखना है. अब हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ है कैपिटल लेटर्स A to X तक हुआ है कि नहीं. हाँ, तो हम लिखेंगे कैपिटल A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डोर, E फॉर एग, F फॉर फिश, G फॉर ग्रेप्स, H फॉर हट, I फॉर आइसक्रीम, J फॉर जोकर, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for what? Watermelon, W, X for fox. The sound of X we have not learned. Okay, in this way you have to write A to X. Yes, I have not told you the sound of X.
See here. X for fox. The sound of X is the sound of X is X for fox, X for ox, X for box. We have completed A to X. A to X. Okay, children? And your homework will be W 2 pages, X 2 pages, A to X 1 page. 1 page you can write in that 2 times, 1 times. How many times you can write? You can write, but in good handwriting and very systematically. Okay, children, with this we will meet in the next video. Thank you, children.